A very good afternoon to all. I hope my voice is audible, Tawfiq. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you so much, Tawfiq. A very good afternoon to all. I, Rosie Tigga, Assistant Professor, Department of Education, Swasati College of Professional Studies, Ghaziabad, welcome you all on day 4 of the 1 week Teachers Training Program on Life Skills organized by Swasati College of Professional Studies, Ghaziabad, in collaboration with CTPD India. I take this opportunity to warmly welcome our Honorable Resource Person, Dr. Sakshi Varmani Rishi Ma'am, Assistant Professor, School of Education, Rishi Wood University, Dr. Sanjay Kumar Sir, Principal, Swasati College of Professional Studies, Ghaziabad, Dr. Anita Singh Ma'am, Head of Education Department, Swasati College, my co-faculty members, and my dear students. I welcome you again on fourth day of Teachers Training Program on Life Skills. Today's topic is leadership and teamwork. On this topic, Dr. Sakshi Varmani Rishi Ma'am will enlighten us today. Now, I would like to invite Tawfiq of BA second year to introduce our person. Over to you, Tawfiq. Good afternoon, everyone. Am I audible, ma'am? Yes, Tawfiq, you're audible. I'm Mohammad Tawfiq Safi, a student of B.Ed second year, feels extremely overwhelmed to get this opportunity to warmly welcome you all on the behalf of Saraswati College of Professional Studies in this informative workshop in collaboration with CTPD. It gives me immense pleasure to invite our today's speaker, Dr. Sakshi Varmani Rishi, who is going to broaden our perspective on the topic of leadership and teamwork skill. Dr. Sakshi Varmani Rishi is working as an assistant professor in the School of Education at Rishi Hood University. She has 16 years of teaching experience, 12 years in teacher education program, and 4 years of school teaching. She has done her MA in Education and Political Science. Dr. Sakshi ma'am qualified UGC NET in Education in December 2010. She has also done certification course as a certified life skills trainer from Singapore University. She has written 3 books of B.Ed curriculum and edited many chapters in different books for teacher education program. Her 4th book, Quality Assurance in Higher Education, Need of the Hour, has been published in 6 foreign languages. I welcome you, ma'am. Over to you. Dr. Sakshi, ma'am. Ma'am, you can unmute yourself. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, you're audible. Okay. Thank you so much for a nice introduction. And before starting my session, I thank you, sir, Dr. Sanjay Kumar, for giving me this opportunity to be a part of this very, we can say this is basically the need of our, the life skills. So for that, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And thank you, Saraswati College of Education, in collaboration with CTPD for this opportunity. Before starting the session, I want, sir, because this is a part of our tradition also, that I want us to start the session with 1 minute of silence. Please, sir, please allow me for that. And I request everyone for that. Om Shanti. Thank you so much. I'm sharing my screen.
I hope my screen is visible. Yes, ma'am, it's visible. Okay. Yes, ma'am, it's visible. Uh, so today's session is on mastering life skills through leadership and teamwork. Before going further, I just want to recall the last 3 days, which were on the sessions like digital and cyber security skills, time management skills, lifelong learning, and adaptability skills. Why there is requirement to learn these skills or to teach these skills to the students? Because we all know that we are living in a world which is digitalized, and now the AI is also coming, already comes in our life. So we are working more with machines than human beings. So the requirement for these life skills plays a very important role in our life. That is why sessions on life skills, classes on life skills, even course structures on life skills, they are required for the upliftment of human beings as a learner as well as an educator. So every activity needs some skills. So this is one of the picture which I have taken of one of the class wherein teacher is teaching in the class. We all know that if we want to be a teacher, before going to that profession, we have to learn some teaching skills. We have to be in the course which is known as teacher education program. So we need, we require, or we can say we learn skills to be a teacher in future. Second picture depicts about the cooking. Cooking is not very easy, and it's not some everyone's cup of tea. We can say that खाना बनाना एंड खाने को बहुत अच्छे तरीके से बनाने में डिफरेंस है. So if you want to be a good cook, and if you want to be in the heart of everyone, so cooking is required, and for that cooking you also require some skills for that cooking. कितना नमक होना चाहिए, कितने spices you have to use, कितनी धीमी आंच में बनाना है. So ये सब चीजों के लिए भी we all know that hotel management course is there. नेक्स्ट ड्राइविंग. वी ऑल लव ड्राइविंग. ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में कोई बड़ा हमें कार हमारे हाथों में दे दे एंड हम रोड पे चले जाएं. नो, फॉर दैट वी हैव टू लर्न सम स्किल्स. देन ओनली वी नो व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ रोड वेयर वी हैव टू गो. मतलब इफ वी आर ऑन द कार, इन द कार वी हैव टू टेक राइट और वी हैव टू टेक लेफ्ट लेन. सो वी रिक्वायर सम skills for driving also, and also from other curricular activity, that is swimming. So it means that for each and every activity of our life we require to learn some skills. Then what about life, how we lead life? We also require some skills to lead life. Now what is skill? A journal and a very brief question about skill, that what is skill. So if we talk about skill, what skills are? Skill is basically the ability to do something well. When we are expertise in that skill or in that activity, we are perfect in each and everything. Like for example, if I'm saying that right now I am having a long experience of teaching only because I know the skills of teaching, only because I know what are the pedagogical skills of this profession, why we are here in this profession, what is my role, then only I can say that I am in this profession. So जैसा मैंने last slide में दिखाया the pictures of different activities. Skills useful in our life are considered as life skills. This is very important because no individual can lead better, or I can say happy life, which is really a motto of my life, that without learning life skills you can't lead life in a proper way, or we can say in a balanced way. Because how you want to be with anyone in your life, that matters a lot. Like I right now I share one quotation from Aristotle, what he said about emotionally intelligent person, that anyone can get angry. We all know that emotions are a part and parcel of our life. We all have emotions, and emotions are negative as well as positive, and we welcome all both the types of emotions in our life. So if I say that angry hona is joyous, किसी भी situation में हमें गुस्सा आ जाता है, but to be angry with the right person,
in a right way, at a right movement, on a right, situation. That is very difficult. गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट गुस्से का सही टाइम पे सही इंसान के साथ सही सिचुएशन में आना इज वेरी डिफिकल्ट. और जिसने ये सीख लिया, दैट इज द आर्ट ऑफ वो एंगर को कंट्रोल करना, कोप अप विद योर इमोशंस की जो हम बात करते हैं, वन ऑफ द कोर लाइफ स्किल ऑफ WHO, गिवन बाय WHO. सो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज इमोशनली स्टेबल पर्सन. तो इट्स नॉट इजी कि हम ये बोल दें कि मतलब मेरे को क्लास में टीचर ने सारे स्किल्स सिखा दिए और मैं लाइफ में बाहर चला गया तो मेरे को आई एम एबल टू फेस ऑल द challenges of life. No. If I'm saying broadly speaking about life skills, that life skills are needed to deal well with everyone associated with us and effectively with the different challenges of life, because the skills we our teachers teaches us, the values our teachers inculcate in us, that is very much required for the betterment of life, because that values, that skills are required to deal the harsh realities of life. Life is not always the bed of roses. जब हम अपने पेरेंट्स के शेल्टर से बाहर निकल के दुनिया फेस करते हैं, वो जो फेस करने वाला सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में वी गेट टू नो हाउ इंटेलिजेंट वी आर, हाउ इंटेलिजेंट, द स्किल ऑफ एडेप्टेबिलिटी आपके नेक्स्ट सेशन में आएगा. तो यू कम टू नो अबाउट दैट. वो जो डार्विन की थ्योरी हमने साइंस में पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ दी स्किल्स. Then only you can say that you lead a life in a balanced way. ऐसा नहीं है, life is a, we can say ups and downs are also the part of parcel of life. We all know what is ECG. हमारी लाइफ में जब हमें ECG कराने को डॉक्टर बोलते हैं तो ups and downs that ECG shows us. Similarly, our life shows that. जहां वो ups and downs खत्म हो जाता है and you see the single line, that means we are dead. So it doesn't mean that life is always the bed of roses. We have to face different challenges in life. That is also part of, but these skills helps us in dealing with, the harsh realities of life, the challenges of life in a better way, or we can say with, strong strength. Okay. So next, life skills are the abilities and the competences that individual need to navigate and succeed in various aspects of life. By developing these skills, individual can enhance their overall well-being, we can say holistic development, achieve greater success in their personal and professional lives. Because it is very much required that we have to know the understanding of these skills for dealing in each and every moment of life, whether we are dealing at our professional place or we are dealing with the personal. We all know that nowadays the generation is dealing with the machines, so the emotional aspect or sensitization part is somehow very low in them, because they approach the pragmatistic approach in life. They are very much practical. So emotion parts को उनको वापस से recover करवाने के लिए, वापस से recall कराने के लिए, the understanding of these skills are required. जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम आपका स्ट्रेस, हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, और जो आज हम बात करने जाएंगे वो वी ऑल नो दैट लीडरशिप स्किल्स एंड दी टीम वर्क skills. So this is one of the, I'm just, giving you some definitions about life skills, that what UNICEF tell us about life skills, that it's a behavior change or behavior development approach designed to address a balance of three areas: knowledge, attitude, and skills. And we all know these three areas are very much required for, leading a balanced life. WHO defines life skills as the abilities for adaptive and positive behavior, which enables the individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Life skills can be classified into three broad categories. The thinking skills are cognitive abilities, social skills, because we all know that we are human beings, we are not machines. So any human being can't say that he or she can live his life in isolation. We need each and every individual who is associated with us for leading a life. Recall your, COVID pandemic time, the COVID-19 situation, wherein for 3 months
We are shut down at our homes. We are locked down at our homes. The definition of this lockdown, shutdown, social distancing हमने पहले कभी नहीं सुना था, उसी दौरान सुना कि लॉकडाउन सिचुएशन भी कुछ होता है. शटडाउन सिचुएशन मींस दैट एवरीथिंग इज शट डाउन. उस टाइम पे हमें अपनों की जरूरत थी. हम किस तरीके से उनसे कांटेक्ट करें, ओनली थ्रू वीडियो कॉलिंग्स. अपने बच्चों को अगर क्लासेस लेनी है, वी आर यूजिंग वर्चुअल मोड्स. तो लेकिन फिर भी कनेक्शन था कि हम उन्हें देख रहे थे, बट one thing is still missing, that is the emotional aspect. Emotional aspect means that wo face to face interaction is missing, wherein we see the emotions of our of all the persons who are associated with us, if I'm talking about professional or the personal situations. So life skills learning, L stands for learning, I stands for identity and self awareness, F stands for fitness and health, E stands for emotional development, S stands for solving problems, K stands for kindness, I stands for intimacy, L stands for living in balance, L stands for letting go, and so S stands for social skills. And if you see this ladder, which depicts the gives the we can say abbreviation of the word life skill, that all these things, if one have to have the better understanding of all these things, so no person can get fail in life. Everyone get connected with the loved ones, having social skills. किसी ने कुछ कह दिया तो letting go is also there. ठीक है, how to live in balanced life, how to make intimacy with the person who really loves you or likes you, who is your love, who are your loved ones. Be kind to the other humans also, because empathetic attitude also we have to show, because we are not animal, we are not machines. Sorry, animals maybe empathetic attitude is there. We are social animals, we are not machines. So life skills is required. So what is the purpose of these skills जिनके ऊपर हम इस पूरा वीक डिस्कशन करेंगे? The purpose is that we have to develop the positive social skills. हम लोग मशीन्स के साथ डील कर रहे हैं. अब जो आने वाला जनरेशन इज 101% दे आर डीलिंग विद द मशीन्स. सो मशीन्स के साथ डील करते करते वो अपनी सोशल स्किल्स, अपने इमोशनल टच को नहीं भूलें. दैट इज व्हाई we have to inculcate the understanding of life skills in our learners, in each and every human being. Develop ethics. Ethical hona bhi bahut zaruri hai, because we have to have the understanding of what is right to us and what is wrong for us. Cope up with stress. We all know that today not only students, everyone is in stress. बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. वी गो फॉर आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस, विल indulge ourselves in the meditation, we indulge ourselves in some other संस्था for the de-stressing up. हम एरोमा थेरेपी लेते हैं, हम डांस थेरेपी लेते हैं, हम सिंगिंग बाउल थेरेपी लेते हैं. why? Because we want to de-stress ourselves. The most important thing is everything is within us. It is only our positive mindset which makes the positive aura around us, because that is required. हमें कोई भी डिस्ट्रेस नहीं कर सकता. अपने आप को हमें डिस्ट्रेस खुद करना होता है. जितना मर्जी हम आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस ले लें, जितना मर्जी हम थेरेपीज ले लें, जब तक हम अपने मन को नहीं समझाएंगे, वी कांट लिव अ बैलेंस्ड लाइफ. हमें अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना है और रिमूव फियर. डर से भागो, डर से जीतो. भागो मत, डर से जीतो. डर के आगे जीत है. वी ऑल नो दैट एड ऑफ ऋतिक रोशन इन द टीवी, दैट डर के आगे जीत है. यस, दैट इज ट्रू. जब तक आप अपनी वीकनेसेस को खुद नहीं जानेंगे, आप पॉजिटिव अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानोगे? सो यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटी टू कोप अप विद योर नेगेटिव थिंग्स. Become self-confidence. That is very much required. Don't be dependent on other. We all need everyone to support us. Not कि हम उन पे totally dependent हो जाए. We know our capability. We know where we are weak, where we are positive. So such type of skills, when we inculcate our students as an educators, or when as a student we have the understanding of these skills, definitely we live a balanced life. So today's skills, we are talking about leadership as well as teamwork skills. So developing life skills,
Developing life skills is essential to lead a better and more fulfilling life. One of the most important life skill is leadership, which involves inspiring and motivating others to achieve a common goal. Leadership is essential for success in both personal and professional settings. These skills can be developed through practice, self-reflection, and seeking feedback from others. I'm just sharing one thing with you that I did PhD in Bhagavad Gita because my topic is to study emotional intelligence as depicted in Bhagavad Gita and its relevance for teacher education. So if I'm talking about this text, it's not only that I'm taking this text as a, as on the grounds of religion. No, I'm taking this text of Bhagavad Gita, which is one of the most practical, approach, which tells us how to manage our life, how to basically the different skills of life, which we also defined as the life lessons we get from this text, that is the Bhagavad Gita. Okay, so Bhagavad Gita mein if you see the leadership skills, उसमें आप सबसे ज्यादा लीडरशिप स्किल्स किसकी मानते हैं, किसको देखते हैं और क्या लाइफ लेसन मिलता है कि व्हेन इन चैप्टर 2 इट टोटली टॉक्स अबाउट द अर्जुन टर्मोइल इन द बैटलफील्ड. तो अर्जुन के टर्मोइल को ओवरकम करने के लिए उनके जो मेंटोर थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उन्होंने किस तरीके से उस टर्मोइल से अर्जुन को निकाला और अर्जुन ने अपना पर्पस ऑफ लाइफ, अपना रोल प्ले किया इन अ वेरी बेटर वे. सो दैट लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड. If you see this picture which depicts the blue person, that is in the leader of that group. तो वो लीडरशिप स्किल्स जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, विजन क्लियर होना चाहिए, मोटिवेशन देना है अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टूडेंट्स को, एथिकल ग्राउंड सिखाने हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है, बेसिकली उसे इंस्पिरेशनल लीडर बनना है. सो ये स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड हैं? बिकॉज भगवत गीता tells us about that a good leader is one who plays a role of a role model, like Lord Krishna. He is the mentor of Arjun. उन्होंने अर्जुन को वो पूरा जो गीता का ज्ञान उस बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में दिया, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अर्जुन. और उसको वो रिकॉल कराया दैट डू योर कर्मास, डोंट वेट फॉर रिजल्ट, डोंट सीक फॉर रिजल्ट्स. Results automatically aate because karmic philosophy is the highest philosophy. You have to focus on your work, be focused. अर्जुन ने जब वो तीर मारा था मछली की आंख पे तो वो फोकस था. अर्जुन ने जब वो उसकी गुरु, उसके मेंटोर द्रोणाचार्य ने जंगल में वो पूछा था कि आपको उस पेड़ पे चिड़िया का क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे चिड़िया की केवल आंख दिख रही है. बिकॉज द फोकस्ड ही, अर्जुन वाज फोकस्ड एट दैट टाइम. तो उसने जो दिख रहा था, जिस चीज पे वो फोकस था, उसने वही किया. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट parameter of leadership skills, that leaders should have a focused vision. Leadership should have a positive approach in life, क्योंकि leader plays a very important role in the upliftment of his team. वो leadership skills आना बहुत जरूरी है. कई बार हम देखते हैं we get the very because leadership styles भी अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी, that we have different leadership styles and those different leadership styles plays a different role in the upliftment of the learners. हम डिक्टेटर का रोल करेंगे तो हमारे जितने कलीग्स, द टीम जो हमारी है वो रिजल्ट वैसा देगी. हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप रोल प्ले करेंगे तो हमारा टीम उस हिसाब से रोल प्ले करेगी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लीडरशिप स्किल्स are very much important for the betterment of any organization, for the betterment of any profession, for the betterment of any relation. I'm giving you one example from our day-to-day life that if we say that we all know that who is the head of the family, our father. Okay, he is the head of the family. जिस family में head is the father and father is the leader of that family. उनका विजन क्लियर होगा, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर होगी, उनके एथिकल प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, उस फैमिली में कभी भी क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशंस डिस्ट्रॉय नहीं होते. व्हेन द लीडरशिप इज नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट और बहुत रिजिड होते हैं कई बार,
बिकॉज लीडरशिप में ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है दैट यू whatever team members you get under you, you have to somehow sometimes change according to their perception, because it's not only one side cup, it's टू साइड रिलेशन. तो जब वेन टू साइड रिलेशन से कोई आउटकम निकलता है तो दोनों साइड के रिलेशंस को थोड़ा थोड़ा बेंड होना पड़ता है. अपने ईगो को, अपने ईगो क्लैशेस को साइड पे रखते हुए यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशंस. सो and the next important thing is the communication skills that plays also very important role in this leadership skills. So these are some of the effective leadership skills: empathy, decision making, communication, vision, integrity, resilience, problem solving, and adaptability. First one is empathy. If I'm talking about empathy, what empathy plays, what role empathy plays? We all know that there is a difference between sympathy and empathy. When you show sympathy towards other person, it means somehow you are, you know, उसको आप किसी भी तरीके से oblige कर रहे हैं. Effective leadership does not require this. Effective leadership requires this, that empathy. When any member of your team is in problem, is in some pain, you think of yourself that when you get that situation, how can you do that work? How can you be in the office? So that empathetic attitude also plays a very important role to, have a strong bonding between your team. Second, decision making. एक बार जो डिसीजन ले लिया, डोंट चेंज योर डिसीजन, बट वो डिसीजन मेकिंग स्किल भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें आप सबका बेटरमेंट देखते हैं. योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एक से बात करके आप बाकियों को अवॉइड कर दो, नो. If you have a team of 5 members, those 5 members are your, hands, the strong hands. So आप जो भी communicate कर रहे हैं, communicate in a team, communicate in a group. Then only your group plays an effective role for the betterment of you, because teamwork plays a very important role. That is why this leadership skills and teamwork skills जो है आज इस सेशन में दोनों हम combine पढ़ रहे हैं. Reason being that दोनों are two sides of the same coin. Vision की बात मैंने बोली, vision should be clear of an effective leader. Resilience, problem solving, adaptability, whatever the situation is, don't crib. अगर लीडर क्रिप करता है, उसकी टीम 100% क्रिप करती है. So these skills are very much required for to teach in every class with different examples from daily life, because यही सब skills से हमारे बच्चे, when we train them for the life, whether they go to any profession, these skills are required, because these skills are the part and parcel of their life. These are some of the leadership styles जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी: autocratic, democratic, transactional, laser sphere, and transformational. If I'm saying from all these leadership styles, the most important is and the most effective is the transformational. Because if I'm talking about this autocratic leadership style, this is just like the dictator. जो लीडर ने कह दिया वही होगा, बेशक वो गलत है या सही. This does not work. Similarly, the democratic, full freedom given to the team. कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी लीडरशिप समहाउ कई बार फेल हो जाता है. ट्रांजैक्शनल में भी अगर हम बात करें तो फोकस ऑन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जहां पे हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं. वी गिव, गलत काम पे वी गिव, लीडर गिव द पनिशमेंट, अच्छे काम के लिए लीडर गिव द रिवॉर्ड्स. ओके, लेजर फेयर की अगर हम बात करें तो इट इज लेट देम डू, बिकॉज लेजर फेयर इज, यू ऑल नो दैट इट्स अ फ्रेंच टर्म, सो इट मीन्स लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. तो ये भी कभी सक्सेसफुल इतना नहीं होता. ट्रांसफॉर्मेशन formational leadership style is the one wherein the leader works with the team. This is required. This is very important. If I'm taking an example of a class, in class, what is required? In class, the teacher is the leader of that class. So what is required in the personality of a teacher? That whatever teacher is doing, teacher takes whole class with him or her. Kyun? Because that class is the team of that teacher.
जो रिजल्ट आएगा दैट इज इन दी दैट इज रिटन इन द नेम ऑफ दैट टीचर कि इस टीचर की क्लास का रिजल्ट ऐसा आया है, इस टीचर की क्लास कितना डिसिप्लिन रोल प्ले करती है, बिकॉज टीचर्स आर दी रोल मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट्स. वट एवर वी हैव इन आवर पर्सनैलिटी, वट एवर वी टीच इन द क्लास, दैट हैज टू बी शो इन आवर पर्सनैलिटी. समटाइम्स क्या होता है, टीचर्स क्लास में बच्चों को कहती है बी रेगुलर, बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, टाइम पे अपना काम दो, बट खुद ही टाइम पे क्लास में नहीं आती. सो बच्चा क्या समझेगा? दिस इज नॉट अ रोल ऑफ अ रोल मॉडल. You have to, whatever you are saying to your class, whatever you are teaching the value system to your class, that value system shows in your personality. If you want your class to be regular, if you want to be your class disciplined, you as a leader of that class shows that parameter in your personality. So transformational leadership plays a very important role in making any organizational work effective or efficient. So अभी मैं आपसे भगवत गीता की जो बात कर रही थी, भगवत गीता में लीडरशिप के लिए बोला गया है, whatever action is performed by a great man, common man follow in his footsteps, and whatever standards made by exemplary acts, all the world pursues. These three lead by example, principle of mutual dependence, and developing high degree of equanimity. These are the parameters. These are the leadership lessons that has been defined in our very practical or we can say perennial philosophy known as Bhagavad Gita. Because Bhagavad Gita में if we see the role of every leader, लाइक भीष्म पितामह का आप रोल देख लीजिए, उन्होंने भी अपने घर को, अपने जो भी अपनी मर्यादा है, जो भी उन्होंने वचन लिया था उसको रखने के लिए उन्होंने पूरा उस पर स्टैंड किया. उन्होंने वो रोल मॉडल वाला रोल प्ले किया कि जो उन्होंने एक बार वचन ले लिया, कुछ भी हो जाए, बेशक विनाश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उस वचन से नहीं हटेंगे. उन्होंने वो रोल प्ले किया. भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो रोल प्ले किया, उन्होंने अर्जुन को वो रास्ता दिखाया. He showed the path to Arjun that how karma is important. Karma is important above everything, above every relation. You people in the philosophical foundations of education, as a student or as an educator, we learn, we teach that what are the different philosophies of life, how we can say lead our life, and what is more important in life, in our life. Every philosophy tells you in one or the other way that the karma is important. The purpose of this life is to do karmas. We come in this world to do some karmas. So वो karma important है. अब आपने वो कर्मा किस नियत से किए हैं, किस क्या डीड्स हैं उसके पीछे, क्या आपकी इंटेंशंस हैं, that plays, or we can say that is the path of that result which you get in future. Whatever you are doing, please keep in your mind that leadership का leaders का main role क्या होता है? Set an example for your team, set an example for your class. So whatever you are doing in your karmas, do with good intention, have that capability that you have, that strength to face the challenges of life. घबराओ मत. कई बार क्या होता है, टीचर्स को ही हम देखते हैं क्लास में आते हैं, बच्चों के सामने बोल देते हैं बहुत वर्कलोड था, हमसे काम नहीं हो पा रहा, इतना ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मैनेजमेंट ने काम दे दिया. इट मीन्स दैट यू आर डूइंग व्हाट, यू आर क्रिपिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन. नो, डोंट सेट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स दैट कि क्रिपिंग भी करना, मतलब आप क्रिपिंग भी करते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं. नो, ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. नहीं आज हो रहा, हम कल कर लेंगे, काम है तो करना तो पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब. सो लीडरशिप प्रिंसिपल्स में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, लीडरशिप स्किल्स में, दैट आपका कहना, कथनी और करने में आपके फर्क नहीं दिखना चाहिए. वही जो बात मैंने आपको बोली, इफ यू हैव that mindset that your students should be regular in class. So being as a teacher, it is our responsibility to show that skill in ourselves first. Then we, accept, or we can say we want that skill in our students. If we are irregular, if we are not attentive in the class, how can I say my students to be attentive in class?
सो मुझे स्टूडेंट के साथ क्लास में अटेंटिव रहने के लिए 1-to-1 इंटरैक्शन, वो क्लासरूम इंटरैक्शन होना चाहिए, क्लासरूम का ऑरा इतना पॉजिटिव होना चाहिए जिनकी मैं बात करी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द लीडर। So leadership skills plays a very important role in our life, because our life decisions, our life outcomes are also based on one of the skill which is most important in our life, that is leadership skills. Because as a parent, we are the leaders of our children. As a teacher, we are the leaders of the students in our class. As we can say colleague, or we can say employee of our organization, we are the leaders of of our team members who are under us. So in each and every situation of our life, as a leader, we have to show our capabilities in a positive sense. And the last and the most important skill of leadership is that a positive growth mindset. If we are positive as a leader, our team also plays a positive role in each and every situation, because that positivity plays a very important role. Iska bhi ek example hai that we all know that we are living in a world which has gravitational force. I'm always, teaching to my students that be positive. Whatever situation you have, be positive, think positive, and have positivity in your life. This is really, we can say it's working. Why? Because when you have a positive attitude towards life, or when you have positive attitude towards any situation, automatically that positive aura attracts the positivity towards you people. तो लीडरशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई किसी काम को करने लगते हैं एज ए लीडर, और समटाइम्स वी फेल, तो हमें अपसेट नहीं होना। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, से नेक्स्ट टाइम वी डू बेटर, और एफर्ट्स लगाएंगे, हम इससे भी अच्छा करें, और होगा वो अच्छा। इट ऑल, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन आवर माइंड। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव सिचुएशंस को रखेंगे, और जितना हम क्रिपिंग और नेगेटिविटी को अपने पास रखेंगे एज अ लीडर, हमें हमारे टीम मेंबर्स में भी वो वाले, जो आप ये कह सकते हो, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी ऐसे दिखने लगेंगे। सो इफ वी वांट टू बी एन इफेक्टिव लीडर इन द क्लास, इफ वी वांट टू बी इफेक्टिव लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी वांट टू बी इफेक्टिव लीडर इन द एट होम, we have to have such skills in us which make our aura positive, which make our aura, we can say that, very good and very effective. Now, second skill is teamwork. Now, what teamwork is? It also plays an essential role in both our personal and professional settings, because without team, we are nothing. Likewise, at the starting of a session, I told you that we are human beings. We are social animals. We are emotional beings. We can't live our life in isolation. For each and every situation of our life, we require someone in our life. हमें हंसना है तो भी हमें कंपनी चाहिए, हमें रोना है तो भी कंपनी चाहिए, वी वांट समवन्स शोल्डर, हमें कहीं पे चाय पीने जाना है तो भी हमें कंपनी चाहिए, हमें मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना भी हो, देन आल्सो वी नीड कंपनी। बात करनी है तो ऑब्वियस से कोई है तो उससे हम फोन पे बात करेंगे, चैटिंग करनी है ऑब्वियस से कोई है तो उससे हम चैट करेंगे। सो एवरी टाइम वी वांट समवन विद अस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टीम, दैट we require team for every work. We can't do work effectively alone. कैपेबिलिटी हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, individual differences is there, but the thing is that how we take that individual differences, उनका सबका हमें positive aspect लेना है। हर इंसान में as a leader of that group, as a team leader of that group, हमें हमारे अंदर वो सहन शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर वो पहचान की शक्ति होनी चाहिए कि हर एक में क्या क्या चीज पॉजिटिव है, उसको हम ग्रैब करें, सबको साथ में लें, एंड वी डू कोलैबोरेटिव वर्क। Always a collaborative and cooperative work gives the positive outcome, gives the quality work. So teamwork involves working collaborative with others towards a common goal. It can lead to greater success and productivity than working alone. We all know that
अगर वो वाला हमने कहानी बचपन में आप सबने सुनी होगी कि फोर ब्रदर्स आर देयर और उनके फादर डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने उनको साथ रहने के लिए, इकट्ठा टीम में वर्क करने के लिए, एक बॉन्डिंग के लिए उनको एग्जाम्पल दिया था, आप एक एक लकड़ी का पीस लेकर आइए और उसको तोड़ के दिखाइए। तो इजीली सबने उसको ब्रेक कर दिया। जब उनको बोला उन 4 पीसेस को एक बार साथ में रखिए और आप कोशिश करिए उसको तोड़ने को, नो वन broke that. What is the moral of that story? That when we are working in a team, we are very strong, and when we are working alone, we are not as strong as we are strong in that team. So teamwork में क्या होता है? You have a group. आप अपनी क्लास में देखिए, being as an educator, see in your class that when you do any assignment in a group, any project work or any assignment, you see that your group works very good. वो इफेक्टिव रिजल्ट आता है, वो वेरी क्वालिटेटिव वर्क आता है। क्यों? क्योंकि द ग्रुप ऑफ 4 to 5 पर्सन, दे हैव डिफरेंट माइंडसेट, और वो सारे 5 लोगों का माइंड उस वर्क में डला होता है, एंड इट gives a very a very good shape to that work, and that work considered as a very effective work of that group. So teamwork skills involve our ability to work cooperatively with others, respect the individuality, because right now I said that individual differences are there in a team, and also work at a common point. We all know that nowadays we are not in joint families. We from very last or we can say 1 decade, that we are left out behind joint families, and we are in nuclear families. So nuclear families में right now mostly 1 child or 2 child, हाँ, इससे ज्यादा नहीं हो पेरेंट्स के होंगे, एक बच्चा या 2। तो आप ये देखो, जिन जो सिंगल चाइल्ड है उसके अंदर ये वाली स्किल्स कहाँ से आएंगी? स्कूल सिखाएगा, कॉलेज सिखाएगा, टीचर्स एज अ लीडर सिखाएंगे। क्योंकि अगर वो स्किल्स उसके नहीं अंदर आएंगी, वो इनकलकेट इन स्किल्स को नहीं करेगा अपनी पर्सनालिटी में, ही और शी कांट लिव अलोन इन दिस लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने कभी सीखी ही नहीं होंगी। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजुकेटर, एज अ पेरेंट्स, दैट वी हैव टू इनकलकेट दीज लाइफ स्किल्स इन द स्टूडेंट्स फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर बेटर फ्यूचर। what is the importance of teamwork right now? अभी हमने यही बात किया, achieving complex goals, enhanced creativity, improved efficiency. So on some common goal, when we are working in a collaborative group, when we are working in a cooperative environment, so our work always pays qualitative results, बिकॉज उसमें एफिशिएंसी, उसमें क्रिएटिविटी और टीम वर्क, जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया काम बनता है। हम चावल प्लेन खाते हैं तो कैसा लगता है? प्लेन राइस, व्हाइट राइस में वो मजा आता है, जब हम उसे खाली खाते हैं वो कोई स्वाद ही नहीं आता उसका, नो टेस्ट। बट व्हेन वी ईट वेज बिरयानी, व्हेन वी ईट वेजिटेबल पुलाव इन आवर we can say at home or any restaurant, तो हमें वो बहुत यमी लगती है। This is the role of teamwork. This is how I explain the importance of teamwork in life. So these are some of the essential components of successful team. Goals should be clear, communication skills, likewise leadership, trust, collaboration, diversity. Because we all know that in a group of 4 or 5 people, we have diversity. हर एक का आइडेंटिटी एक जैसा नहीं रहता। तो when we are working in a group, we have to face that diversity in a positive sense. And the most important is we have to trust everybody. Because trust factor जहां से हट जाता है, वहां पे कोई भी रिलेशन, कोई भी वर्क पॉजिटिव वे में नहीं आता। So next also, because I'm taking Bhagavad Gita as a perennial philosophy for these skills, so teamwork skills जो भगवत गीता में बताई गई हैं, T stands for trust, E stands for enthusiasm, N stands for ambition to succeed, M stands for mutual interest, W stands for workability of goal, O stands for openness, R stands for resilience, and K stands for key result area. अगर आप इन सब वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, you get to know the idea that whatever life skills we are teaching in this week, whatever life skills our teachers tell in our classroom, whatever life lessons we get from our parents, all the those life skills जो हैं, they are very important for leading a
positive life, because बहुत जरूरी है have a positive growth mindset for balanced life. और अगर हम इन सबकी बातें करें तो भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज बोली गई है जो हम आइडियलिस्टिक फिलोसफी में भी पढ़ते हैं एंड प्रेगमेटिस्ट में भी पढ़ते हैं, बट दैट इज समहाउ उसका थोड़ा सा अपोजिट है. आइडियलिस्टिक में हम करते हैं द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज व्हाट, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड pragmatist philosophy says that the main aim of education is self expression. तो अगर हम दोनों टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, so when you realized your own self, when you know what is your weakness, when you know what is your capability, then only you are able to adjust in this society. Then only you are able to adjust in this life, because adjustment is also very much required for leading a balanced life. I hope this is clear to all. So, in conclusion, life skills such as leadership and teamwork, they are essential for leading a better life. These skills not only benefit individuals in their personal lives, but also in their professional careers. Effective leadership can inspire others to achieve their goals, while effective teamwork can lead to successful collaborations and projects. Developing these life skills take time and effort, but the results are worth it. So, by continuing to develop one's skill, one can enhance relationships, improve communication, increase one's chances of success in all aspects of life. So, in nutshell, I just want to say one thing, that really it works. These life skills, the knowledge of these life skills plays a very important role in each and every individual. So being as the leader of the group, being as the member of any team, we have the understanding of these life skills. Because it's not only the one question I put to you all people is that why the art of living classes, why the different life skill trainer classes, why the different other sanstha classes which are talking about life lessons, or why any pravachans from any gurus are required nowadays very frequently. बहुत जल्दी हम देखते हैं आज एक गुरु बन गया, आज एक बाबा आ गए, आज वो जिंदगी के ऊपर हमें लेसन दे रहे. Why not our ancestors learn about these skills? उनके टाइम पे आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस क्यों नहीं थी? उनके टाइम पे कोई लाइफ स्किल ट्रेनर्स क्यों नहीं थे? आज हर स्कूल में वी वांट स्कूल काउंसलर्स, और हर स्कूल में वी वांट लाइफ स्किल ट्रेनर्स. Why life skill trainers are required? What is the requirement of school counselors in the school? Only because the main and the most important reason which I think is that as a parents, we don't have any time to inculcate such skills among our children. As a teachers, we are thinking that it is our job that we come to the class, we teach to the students, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, we get our salary, we go back. No. Teaching is considered as a pious profession. We all know that teaching is the mother of all professions. आज IITians बने हैं, doctors हैं, engineers हैं, they are only because of our teachers. So we should respect the teaching community. We should respect the, we should basically, it's not only on Teachers' Day, 5th September, that we should respect and greet our teachers. It is for every day that we should respect our teachers, that उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, उनकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं, हमने लाइफ के एम को अचीव किया. सो अगर हम टीचर कम्युनिटी को इतना पायस कह रहे हैं, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीचर्स that we have to inculcate such skills among our students for their betterment. We have to inculcate, मतलब अपनी क्लासरूम टीचिंग के साथ उनको साथ साथ थोड़ी सी स्किल सिखाइए, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि आपको जिंदगी में कैसे इंसानों के साथ डील, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इंसान्स, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स. So in the end, I just say that life skills play a very important role for shaping our behavior, for shaping our personality, and they are really the lifeguard for leading a balanced and happy life. So namaste everyone, thank you so much. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you so much for very informative workshop. And now I would like to invite Dr. Kamna Chaturvedi for vote of thanks.
थैंक यू, थैंक यू। ना मैम गुड आफ्टरनून ऑल कामना ऑफ मैम, यू। 1 मिनट रुकिएगा जी जी। एक तो पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, तो मैम के साथ एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जी। और मैं आपको मैम बधाई दूंगा कि आज मैं जो सेशन अटेंड कर रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भगवत गीता के थ्रू लीडरशिप और टीम वर्क को अंडरस्टैंड करना, और इसमें आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी एक जो इंटीग्रेशन एजुकेशन में कैसे होना चाहिए और उसके थ्रू कैसे चीजें जानी चाहिए वो समझने में मदद की। और एक जो बड़ी अच्छी बात लास्ट में आप कह रहे थे कि वो राम और रावण का जो फर्क है ना, एजुकेशन में वो वैल्यूज का ही डिफरेंस है। अगर वैल्यूज को निकाल देंगे तो वो रावण वाली दिशा में चला जाएगा, और अगर वो रहेगा तो राम वाली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। काफी कुछ सीखने को मिला आज आपके सेशन से। थैंक यू सर। कामना मैम प्लीज, सॉरी आपको बीच में मैंने डिस्टर्ब किया आपकी प्लानिंग में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सभी वीडियो कैमरा ऑन कर ले, जिससे पिक्चर्स क्लिक की जा सके। स्टार्ट करें सर? यस ये कामना मैम, यू कैन स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर कामना चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गाजियाबाद से हूँ। 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन रिसोर्स पर्सन की भूमिका का निर्वहन करने हेतु डॉक्टर साक्षी वर्मानी ऋषि मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्यभार दिया गया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने मैम लाइफ स्किल्स के विषय में विस्तृत जानकारी हम सबको प्रदान की। लाइफ स्किल्स के प्रकार, उद्देश्यों, प्रभावी नेतृत्व के गुण आदि को बड़े रोचक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। भगवत गीता में कर्म की महत्ता तथा नेतृत्व के सिद्धांत के विषय में बताया। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैम, आपने टीम वर्क को बड़े ही रोचक कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब धन्यवाद देने की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर साक्षी मैम को हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। तत्पश्चात मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा इसी के साथ प्रोग्राम में जुड़े सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बड़े धैर्य तथा मनोयोग पूर्वक संपूर्ण वक्तव्य को समझा और सुना। सभी को धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम को। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच साक्षी मैम। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स आफ्टर फिलिंग द फीडबैक फॉर्म ही लीव कीजिएगा। 1-2 मिनट लगेंगे अभी फीडबैक फॉर्म को शेयर करने में, थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है, अभी शेयर कराते हैं उसको। जस्ट गिव 2 मिनट्स।